Hello my friend, my name is Aniket and this is the part 7 of one word। अगर आप इससे पहले पार्ट 6 तक नहीं देखें तो प्लीज़ जाके चैनल विजिट करें। हम डेली आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन for Air Force X and Y and Navy SSR. The first one is a disease of the mind causing an uncontrolled desire to steal. A disease of the mind causing an uncontrolled miscontrol नहीं हो माइंड का, desire to steal चोरी करने से। They are the four option: claustrophobia, kleptomania, पायरोफोबिया, इंसोमिया। तो अनकंट्रोल डिजायर टू स्टील मीन्स चोरी, कहीं जैसे कहीं गए तो कुछ उठाने का आदत हो, कुछ उठा के रख लिया जाए, उसी को कहते हैं क्लेप्टोमानिया मीन्स अनकंट्रोल डिजायर टू स्टील इज कॉल्ड क्लेप्टोमानिया। क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, fear of close place is called kleptomania. The second one is an imaginary name assumed by author or disguised. They are the four options: facial smile, surname, pseudonym, none of these. So an imaginary name assumed by the author is pseudonym. The third one is a voice loud enough to be heard, एक ऐसा वॉइस जो लाउड इनफ हो। दे आर द फोर ऑप्शन: एप्रोडेबल, लाउडेबल, ऑडेबल, ओरल। तो ए वॉइस लाउड इनफ टू बी हेयर्ड इज ऑडेबल। A voice loud enough to be heard is audible. The fourth one is one who takes up arms against the government. One who take up arms against the government. They are the four options: rebel, export, aggressor, dotage. The one who take arms against the government is called rebel. The fifth one is continuity fight between the two party, families, etc. Continuity fight between two party or families, etc. They are the four options: enmity, feud, debate, quarrel. So continuity fight between the two party or family is called feud. The sixth one is one who deal in flower. एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो डील करे फ्लावर में। They are the four options: fatal, fatalist, florist, florist. The one who deal in flower is called florist. Fatalist, which is believe on faith, is called fatalist. The seventh one, a vehicle which is used to carry a dead body. एक ऐसा व्हीकल जो कैरी किया जाए डेड बॉडी उठाने के लिए। They are the four options: have, hanger, hearse, dead body car. तो a vehicle which is used to carry a dead body is called hearse. The eighth one is interesting in and clever at many different things. Interested in and clever at many different things. They are the four options: venal, wardrobe, versatile, veteran. So interesting in and clever in many different things is called, जो बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्लेवर इन मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारा डिफरेंट थिंग्स में क्लेवर उसे कहते हैं वेटरन। द नाइन्थ वन इज इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च. Evening prayer in a church. They are the four options: circumlocution, soliloquy, whisper,
maiden speech. तो evening prayer in a church is called whisper. The last one and the 10th one is a person or thing that is a perfect example. एक ऐसा पर्सन और थिंग जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो. दे आर द 4 ऑप्शन: इपिटोम, इपिटेप, इपिस्टल, इफेमिनेट. तो ए पर्सन और द थिंग्स दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल इज नोन एज इपिटोम. इफिमेट मीन्स अ पर्सन हु इज फेमिनिस नेचर. फीमेल जैसा जो शो किया जाए उसे एफिमिनेट किया जाता है, एफिमिनेट कहते हैं. एट लास्ट, थैंक यू एंड जय हिंद.